Spurs, they're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. माइकल होल्डिंग की ऐसी की दोस्तों को तैसी। टूर किया, दुश्मनों को भी टूर किया, जो भी किया हमने किया टूर से। घर में तो घुस के मारा घर में दो घुस दो के मारा बार 50 साल बाद इंग्लिस्तान के 50 घर में। हाँ, एक बार 50 साल बाद मोदिस्तान के ओवल घर में और 14 साल का वनवास तो अब हो गया। फिर तो मैं अभी से बोल ही देता हूँ। क्या वैसे अपने ये ना इतने गधे हैं अपने मीडिया वाले ना कि वो ध्यान भी नहीं देंगे कि 14 साल का वनवास को यूज किया जा सकता है। अभी मैंने बोल दिया तो मैं क्लेम कर लूंगा बाद में कि मेरी वजह से। लंदन फतेह। लगान के ऊपर कुछ हेडलाइंस नहीं आई क्या? लगान कर्मा थ्योरी ऑफ लगान। आई तो होगी। आज एक चैनल पे ये चल रहा था कि माइकल वॉन और गांगुली के बीच हुआ घमासान ट्विटर पे। क्यों हुआ घमासान ट्विटर पे? पता नहीं, उसने माइकल घमासान कुछ नहीं, थोड़ा बैंटर हुआ होगा। बैंटर हुआ हाँ। था, उनको लगा घमासान। हाँ, तो हाँ। उसने बोला, गांगुली ने बोला कि बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ ब्ला ब्ला ब्ला। तो माइकल वॉन ने At बोला BCCI हाँ @BCCI @जयशाह At BCCI, हाँ। और माइकल वॉन ने बोला होगा रेड बॉल में बट नॉट इन वाइट बॉल क्रिकेट, इतना ही। उसके लिए कुछ बस, और गांगुली ने कुछ बोला फॉर्मेट के बारे में, उस पे एक शो कर दिया आधे घंटे का। तो थोड़ा मैच की बारीकियों पे जाते हैं। मैच हमने सेकंड डे पे किया था। बात की थी ना। हाँ, उसके बाद मैं एक्चुअली आखिरी दिन से शुरू करता कि आखिरी दिन पे जब खेल शुरू होता है तो भी मतलब इंग्लैंड हैड अ चांस फॉर अ ड्रॉ एटलीस्ट। दे कुड इवन हैव थॉट ऑफ लाइक गो एमिंग फॉर अ Yeah. विन बट एटलीस्ट अ चांस Yeah. फॉर अ ड्रॉ। तो वहां से मैं अपने बॉय की बात करना चाहूंगा, बुमराह, मेरा बॉय। अच्छा, हाँ, ओके। आई थॉट बॉयज यादव। बॉयज याद नहीं, बॉय बुमराह। सो एनी कमेंट्स ऑन बुमराह? आदित्य फर्स्ट। यार वेरी क्लासिकल लाइक सबकॉन्टिनेंटल स्पेल था यार। मतलब, ऐसे देख के लग रहा था कि मतलब विकेट गिरने वाला, दैट काइंड ऑफ स्पेल। सो I now you actually come to think expect this of him. So no, I actually think this is going to be one of the best spells which would be forgotten because it was just 2 for 27. Like for example, I would put it up with that spell that Ambrose bowled, right? 6 for 1. Like in that spell, he took 5 for 1. His overall figures were 6 for 1 or whatever. और that And spell, not like wicket के terms में तो obviously नहीं, but importance के terms में, and that's why I'm saying like because he only took 2 for 6 in that spell, the wickets were only 2. It will be forgotten, but this was as good as a 4-4 or a 5-4. Because nothing was happening and just like this was pure bowling skills which got मैं बहुत ऑड सी याद दे रहा हूँ, मेरे को ऑड सी मेमोरी आई, पता है किस चीज की? कैलकाटा में शोएब अख्तर की। बट और फिर भी उस कलकत्ता में शोएब अख्तर का, लेकिन बुमराह इज बॉलिंग एक्सेलेंटली, मतलब एंड ही इज अ फार बेटर टेस्ट मैच बॉलर देन शोएब, बट फिर भी द थिएटर ऑफ दैट दोस टू यॉर्कर्स वाज समथिंग डिफरेent, पता नहीं क्यों। मतलब You're right. and they were also back to back and it was Sachin Dravid and Dravid, so yeah, even Rahul was right. Pope और Johnny वो नहीं, वो बनाना जो रिवर्स स्विंग भी था, especially the one that got Sachin. And Sachin also has this exaggerated way of like once he gets out, गिर भी गया। So all of that put together, something more theatrical about all of that. हाँ. But the second Yorker, पोप का तो यॉर्कर नहीं था खैर, बट बेयरस्टो का तो क्लासिकल मतलब टो क्रशर था, मतलब रिवर्स स्विंगिंग टो क्रशर। वो देख के जो हम लोग देखो, I said right, it will take something special from Bumrah. हमको मतलब जो इरफान पठान का तुम लोगों को याद है, वो जो गिलक्रिस्ट को निकाला था उसने पहले टेस्ट मैच, पहले सीरीज में, मतलब दैट वाज अ फ्लोटी यॉर्कर, राइट? मतलब दैट कम्स इन, दैट स्विंग्स अ लॉट बट इट्स अ फ्लोटी वन। ये तो मतलब ट्रेजेक्टरी वाज लाइक there is no way you can play that basically. You can play that, yeah. और ये बेयरस्टो बहुत बोल्ड होता है यार। मैं ये लोग सुन रहा था ग्रेट क्रिकेटर वालों को, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जो मतलब शायद तुम लोगों ने सोची होगी बट मैंने उतनी नहीं सोची थी,
कि think of any right arm bowler, fast bowler, the ball comes to you from their right ear, right next to their right ear. That's the proper technique of bowling. That this is what they Yeah. teach you. high arm action. Then, in case of Bumrah, ball is coming from this, Hmm. from almost his left ear, Left ear. which Yeah. is like almost like facing Stark, but not knowing that you're going to face Stark. It's like someone coming in with a right arm bowling action and then bowling a left arm, Bowling left arm. and that's I think where kind of I think just a word on that Osman Samiuddin article. Yeah. Matlab, the yeah. best thing about this test match has been that we've had Usman 4 Samiuddin. Osman Samiuddin pieces on an Actually, India yeah. game. On an India Yeah, game, which yeah. we probably would Yeah. never have gotten otherwise. Probably. So Yeah. even the piece on Umesh, right, the day before. Matlab, these are not pieces that you typically get. You won't see an article on Umesh Yadav being written, right? Yeah. That too, Usman's article. Exactly. अभी तो इस चीज के ऊपर लेकिन एटलीस्ट बुमराह के ऊपर बहुत पीसेस तो बहुत लिखे जाएंगे. हाँ. अब एक सीरीज रिव्यू शारदा ओगरा से और हो जाए तो राउंड अप हो जाएगा मस्त एकदम. अभी एक टेस्ट बचा हुआ है. आई नो उसके मतलब आफ्टर दैट. एक तो प्रॉब्लम आजकल ये हो गई ना कि वो टेस्ट होगा, आई डोंट नो क्या होता है उस टेस्ट में, उसके बाद 3 दिन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, मतलब 2 मिनट बैठने का भी टाइम सिंक इन होने के लिए. सेम हैपेंड विद द 2011 वर्ल्ड कप, राइट? वर्ल्ड कप हाँ, खत्म yeah, हुआ yeah, 3 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन बाद की तरह लगा था, मतलब एब्सोल्यूट लाइक सकिंग आउट ऑल जॉय. अच्छा, और एक और चीज उसमें डिस्कशन हो रहा था, जो तुम लोग से डिस्कशन कर रहे थे कि थोड़ा सा बुमराह भी रहते हुए उन लोग ने कहा कि शेन वॉर्न से ड्यूरिंग द मैच was asked the top 10 fast bowlers of the last 50 years. Obviously, there was no Indian in that. But they were saying that Bumrah will be in that list very soon. Yeah. Vaughn said that, yeah. So, Vaughn himself said that he will be. But how much? I think Vaughn himself. But when you rate like fast bowlers, like how much do you say give importance to longevity in that sense? Because, for example, Honestly, Shane I Bond, don't. right? Shane Bond is one of the most skillful Exactly. fast bowlers that That's I've why seen I'm in the saying. previous decade. But he never That's gets what I'm into any saying. of these lists. Yeah. No, I don't personally don't, because Shane Bond, Ryan Harris, Simon Jones. I mean, like वही ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, बाबू मशाइल लंबी नहीं होनी चाहिए. So तो मैं like Ryan उस हिसाब से Harris पूछा, तो but I think I feel Bumrah may not have this 15-year टेस्ट करियर, like 10 years से ज्यादा, बहुत लंबा करियर मुझे नहीं लगता है कि हो. तो अच्छा है, but with that action, I mean, he's and also already 27. and with yeah, that he's already action, and he started at 24, 23, 24. हाँ, तो obviously 15 years तो नहीं होने वाला है, but हाँ, But 10, like, 12 years. so my question to you guys: will Alan Donald feature in your top 10 bowlers of the last 50 years? yes, Top 10 fast watchability के हिसाब से तो मेरे Of the last 50 years. since we last नहीं 50 50 छोड़ दे, मतलब since we started watching cricket, Donald would definitely make it. I mean, we are not choosing the top, right? We are choosing at least 10 ना. हाँ, yeah, Donald. So Donald. I mean, वही है ना, अगर सोचने बैठ जाओगे तो Donald बहुत सारे debuted आ when he was जाएंगे. 25 is what I'm saying. Yeah, That's what yeah, I yeah. wanted to say. That it's not like okay. it's not too late is what I'm Yeah, trying to say. yeah. और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा बुमराह को फिटनेस पे थोड़ा क्रेडिट अभी भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज एक्शन. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट हाई आर्म थिंग, ही इज नॉट रियली रनिंग. हाँ, he isn't running at all. He's not really running at all, and he's not really exerting himself at all. Now my question is, I know that Kohli wants to do 3-1. I mean, anyone. I mean, obviously Definitely. want to. No, not that's the thing, right? If this was the Ashes, They will be done. like nobody would have created, like you retain the earn and you're good. But in this case, yes, he would definitely want to do 3-1. So then, if you were Kohli, would you play Bumrah in the last test? That's the thing, right? I honestly won't, because the side effects of that example are right in front of you with Jofra Archer and what Joe Root did to him last year. So, because you have a T20 World Cup coming, you have the IPL में obviously वो खेलेगा ही, so I personally wouldn't. But actually, will we really miss him there if we really pick a decent team? Like if you have Shami खेलेगा. back. मेरा हाँ, question obviously है, Shami will be अगर back. शमी आ रहा है वापस तो मैं सोच सकता हूँ बुमराह को बैठाने का. Yeah.
if Shami's definitely coming back. So just for the heck of it, I won't risk him. Like, why? Like, I don't. I've also like I would give him some time. Because फास्ट बॉलर्स की इंजरी फिर वही हो जाएगा ना, like आर्चर इज आउट फॉर इवन एशेस, सो यू डोंट वांट दैट. मैं तो अगर सीरियस होते ना ये लोग, तो मैं तो ये तक कहता कि आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि आईपीएल में कितने मैच खेलती है एक टीम? 14 मैच खेलती है ऑलरेडी 7 खेल, मतलब आधा हो चुका है, राइट? आधा हो चुका, 7 खेलेगी, 7 चौको 28. मुंबई है तो 10 खेलेगी एक्चुअली, बट चलो अब मिनिमम 28 ओवर हाँ करेगा बंदा. हाँ, यानी कि 28 छंगे कितना होता है? 140 168. तो 168 बॉल्स फेंकनी है उसको. नो, बट 168 बॉल्स प्लस आईपीएल में थोड़ा फील्डिंग पे भी ज्यादा हो रहा है, तो या देयर आर अदर वेज टू गेट हर्ट. I would limit him to kind of to a number of deliveries. That's like जैसे मुझे ये पता है कि कुछ बॉलर्स पिक किए हुए हैं इंडिया ने, राइट, जो टीम नेशनल सेटअप में भी नहीं है, पर जब वो डोमेस्टिक में खेलते हैं, फॉर एग्जांपल योर नवदीप सैनीज एंड ऑल, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हैं कि आप उनसे एक दिन में इससे ज्यादा ओवर नहीं करवा सकते हैं. तो इस तरीके का कुछ. बट हाँ, moving on from Bumrah to what do you think? Like, do you think, because at the end of the day, England is, I mean, we lost that last test, but we have been saying that England is not looking the England that people thought Yeah. it would, right? Yeah. Do you think, I don't know, and this is a kind of a difficult question, but a win is a win is a win. But do you think that we are meeting England in a very specifically weak phase of theirs? Yeah, yes, but I Does that won't matter? put it like, But granted, I mean, it's home side really is not only like find batting. way. Yeah, batting wise, yes, but bowling wise, even with these new like, they're not very experienced bowlers, but they're still like, this team bowled us out for 78. So ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है उनके पास. उसके लिए भी नहीं, मतलब अगर तू ये सोचेगा कि ऑली रॉबिन्सन हैज हैड अ ड्रीम डेब्यू, राइट, तो रॉबिन्सन वर्सेस आर्चर क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, मतलब in that sense, right? You will give the same figures, right, give or take. Yeah, eventual figures, Robinson and Archer में ज़्यादा फर्क नहीं होगा. Other than Stokes, they are not really missing anyone. Batting, I mean, has been subpar with England for a while now. I don't think it's not just this series. 2019 Ashes was the same. But the only thing is that in fact, home teams, even when they miss players, do tend to figure out a way of winning. In fact, if Root would have had one good innings in this match also, this was also gone. So it's not like, and both the times, like I mean, टैगोर सर ने तो लूजनर से ही आउट कर दिया. टैगोर सर को तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको आउट करने के लिए, बट we know what it took from उमेश to get him out in the first. टैगोर आते हैं और उनका काम हो जाता है, मतलब. अच्छा, तुम दोनों से मेरा एक लूप क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट लाइव स्टेडियम में नहीं देखा है. तो जब आप क्रिकेट लाइव स्टेडियम में देखते हो, तो जब फास्ट बॉलर बॉल छोड़ता है, क्या बॉल दिखती है तुमको? क्या बॉल दिख रही थी तुमको बैट? जैसे टीवी में जब हम देखते हैं तो हमको बॉल दिखती जाती है. बट व्हाट यू कैन फील इज द पेस, मतलब पेस फील होता है. विजडन इंडिया ने पीस लिखा है बुमराह के ऊपर. आई एम सॉरी, मैं बुमराह का बहुत ज्यादा वो कर रहा हूं. No, but then you are not as close to the bowler as the batsman is. So batsman को भी नहीं दिखती होगी. But I have watched it from two angles, मतलब one from the mid on के पीछे वाले stand से, and a couple of other games I have watched square on. Square on, of course, you do get the sense of depth, मतलब how far back the keeper collects it, stuff like that, and the point where it thuds, right? I've seen Brett Lee live. और ब्रेटली को मैंने गांगुली को डालते हुए देखा है बॉलिंग, और गांगुली को दिखाई नहीं देता. मतलब हमको तो ऑनेस्ट ऐसे दिखती टेनिस में भी नहीं है बॉल जब सर्व होती है. सो इट्स, तो बट यू कैन, टेनिस के सर्व की स्पीड उतनी होती है एक्चुअली. हां, ज्यादा ही होती है एक्चुअली. हां, 200 माइल केस तक चला जाता है, मतलब 130 माइल्स तक चला जाता है. बट द थिंग इज यू कैन गेट अ सेंस ऑफ हाउ क्विक इट इज, मतलब मोर देन टीवी एक्चुअली. Because TV में the visibility is so good,
you don't get a sense of how big that क्योंकि whole thing is. जो And the ऑली camera angle, right? You're literally watching over the bowler's shoulder. क्योंकि जो ऑली पोप का विकेट था उसके बारे में लोगों का ये कहना था, लोगों का तो ये भी कहना है कि ऑली पोप has an average of 80 plus in county in this ground, and he's the future of England batting. But this is where you find out that he has just not yet graduated to the next level. मुझे ऐसा लगता है किसी किसी पे बेचारे पे बिना मतलब के लेबल लगाने लगते हैं लोग शुरुआत से, जैसे वो लाइक कैमरून ग्रीन को नहीं बनना है स्टोक्स, लेकिन उसे बोल बोल के बनाई, मतलब थोप दिया उस पे. Next year, so I think the same thing is happening with low benchmark. But ऑली पोप को देख के अच्छा लगता है, he has that. No doubt, Give him no a few doubt. years, he'll be a good batsman. Yeah. But not yet. तो वही मतलब वो कह रहे थे कि the Bumrah taking out Pope was basically Pope not being able to graduate to the next level. That is what it was. Yeah. I mean, not yet for sure. But I think a lot of batsmen will be found out because of the quality of pace attacks going around. I agree with Data Sir on that. Yeah. I mean, रहाणे और पुजारा की देख लो क्या हालत हो रही है. अरे हाँ, तो क्या 2 मिनट इसके बारे में बात कर लेंगे? #thank you रहाणे. रहाणे का फ्यूचर क्या है? क्या खेल रहा रहाणे अगला टेस्ट? मुझे इसको डेब्यू मिलने वाला है. खेलना नहीं चाहिए, मतलब that is. मुझे ऐसा लगता है because we have won, he just might sneak in again. But कैसे यार, मतलब it's actually bad for him if he sneaks in. Yeah. I totally get it. I wouldn't pick him. I would go and tell him कि I wouldn't say कि मतलब अब हो गया तेरा. I would just say कि do you really, मतलब because उसका एवरेज भले ही अगर करियर एवरेज उसका अंत में 35 भी हो जाएगा ना, बट ही इज बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी इंपॉर्टेंट विंस एंड सो मेनी इंपॉर्टेंट फाइट बैक्स कि ही डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट. इनफैक्ट पिछले इस लॉट के हर ओवरसीज टेस्ट विन में उसका कंट्रीब्यूशन रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस टेस्ट मैच. या and every so I would just tell him कि do you just take a bit of a break maybe. और इसको खिलाओगे? मैं विहारी को खिलाऊंगा अभी के इसमें तो. मैं भी विहारी को खिलाऊंगा. डिजर्व्स लाइक पैकिंग ऑर्डर में मतलब. Exactly, because he literally put his body on the line and that's how he lost his place. It wasn't because of bad form or anything. Definitely विहारी. And he can roll his arm over as well. यार कुछ तो चाहिए मतलब. Exactly, ये बात. I still think वो कल मुझे गुस्सा बहुत आया था और मैं ये भी बोल रहा था कि अब तो अश्विन को ही मना कर देना चाहिए कि नहीं खेलना है मेरे को ये वो. But I still think कि खेलना चाहिए उसको. Like लास्ट टेस्ट में मतलब 2 दिन बारिश स्केड्यूल्ड है. मतलब एटलीस्ट फोरकास्ट तो है. बट अब 2 दिन बारिश है तो फिर वही हो जाएगा. ट्वीट आएगा इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं क्यों यार. हाँ खेलते हैं. हाँ. So why not play in Dubai? शेड्यूल है तो रोड पे खेलना है इनको बेसिकली. दुबई में होगा ना टेस्ट अभी. नो बट अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का. नहीं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का नहीं. अफगानिस्तान और कोई ट्राई सीरीज हो रही है तुमको पता है? ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान. वर्ल्ड टी20 वो वेस्ट इंडीज जीतेगी. वो वेस्ट इंडीज जीतेगी. ऑस्ट्रेलिया बहुत ऑस्ट्रेलिया विल प्रॉब्ली बी एट द बॉटम. हां या और फिर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया आएगा एक टेस्ट खेल में जिसमें मुझे पता है मैथ्यू वेड को कैप्टन बना के भेज देंगे लोग टेस्ट मैच में. मुझे ये भी पता है. या और वो होगा ऐसे कैनबेरा या होबार्ट में वहां पे डार्विन या केन्स. डार्विन केन्स में नहीं हो रहा एक्चुअली, वो उसमें हो रहा है. होबार्ट में हो रहा है शायद. हां डार्विन केन्स में एक टेस्ट मैच कराया था पता है उन लोगों ने. किसको दिया? श्रीलंका को दिया था उन लोगों ने. बांग्लादेश को भी दिया डार्विन केन्स में. बांग्लादेश खेला है क्या ऑस्ट्रेलिया में? बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में खेला है टेस्ट मैच. 2 टेस्ट मैच खेला है. व्हाई डू आई फील दैट बांग्लादेश कभी खेला ही नहीं है. आई डोंट नो. नहीं खेला क्योंकि 5 वेन्यूज तो उनके फिक्स है ना अभी एशेस. नहीं है बट वो उन लोगों ने एक बार एकदम आउट ऑफ सीजन दे प्लेड अ couple of test matches against Sri Lanka in Darwin and Cairns. Because Darwin में तो कभी भी खेल सकते हो. कभी भी खेल सकते हो. It never rains there supposedly. तो yeah. Siraj might be rested for the next game. Likely. If Siraj is rested, तो you would not rest Bumrah क्या? शामी आ जाएगा. और अगर तू बुमराह और सिराज दोनों को बिठा रहा है तो शामी और ईशान को शामी और किसी नहीं यार.
नहीं, ईशांत को क्यों नहीं खिला सकते? मुझे समझ नहीं आया. Like, I mean, I didn't see a problem with his bowling. I just नहीं, thought वो मैं he रिदम was को सिराज नहीं की था जगह ना. अश्विन को ला सकता हूँ, सिराज की जगह नहीं अश्विन को ले हाँ सकता वही, but he's had a break now, so I think हूँ. तो बुमराह की जगह शामी और सिराज की जगह अश्विन, ऐसा हो सकता है. I think मुझे ऐसा लग रहा है all of a sudden without any fault of his, ईशांत फिर से मतलब डिग्रेड होने लग गया. I don't know why. बट इफ इट्स अ 3 डे Like, टेस्ट मैच, तुम किसी को भी खिला लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब यू वोंट हैव टू बोल अ लॉट. मैं उस हिसाब से सोचा था, अगर इफ मैं देयर इज अ लॉट हाँ ऑफ रेन फोरकास्ट, देन माइट एज वेल प्ले बुमराह इन दैट तुम सेंस. मैं बुमराह को बुमराह को खिलाओगे और फिर नहीं देखना मैं बारिश नहीं होगी. हाँ मैं बुमराह को नहीं खेलाऊंगा जस्ट बिकॉज उसने अपना काम कर दिया है. एंड देन देयर इज IPL, देयर इज T20 वर्ल्ड कप. आई थिंक मैं ईशांत को खिलाऊंगा. सिराज भी 4 टेस्ट खेला है ना, सो आई वुड एक्चुअली. अब वही है ना कि नाउ नाउ हाउ डू यू ड्रॉप शार्दुल? शार्दुल का कुछ बहुत ही खतरनाक But he वो does है, not राइट? look like a threatening bowler, yeah. Exactly, but somehow he is. I'll tell you He's what. getting wickets. I'll जैरेड tell you किम्बर का what. वीडियो देखा ना उसका? I'll tell you what. जैरेड किम्बर ने उसके जो वीडियो की वो देखा था. मैं Like, एक चीज बोल रहा हूँ बस. हाँ Jacques Kallis got हाँ 393 test wickets. But never felt. Why did he yeah get those wickets? Because got he those had wickets because Pollock people who and were bowling from the yeah other yeah end were far more threatening, and people started taking more chances against him, and he got wickets. Hmm. Now, but the thing with Kallis is that Kallis was But average legit like one of the 55. top 3 Yeah, batsmen when he was playing. 55 with the So bat. if he So offers you something with a ball, that's just like you just take it. yeah, Now, Shardul will get wickets, and right now he's like I don't. मैं क्या so बोलूं? that's the thing, right? वही तो, which is a very good problem to have actually. But मैं वो बोल रहा हूँ कि again it is unquantifiable. But sir, every time he somehow has so उसका far रूट का in जो his सेकंड इनिंग्स का scorecards. विकेट है, उससे ज्यादा हाँ किस्मत तो yeah किसी के yeah अच्छी है ही exactly नहीं. ना. उसे Yeah, लॉटरी ले ले वही वो. वही तो बोल रहा हूँ मैं कि he gets, and he got root at in the first test as well. So not फर्स्ट only टेस्ट he का तो gets big लेजिट players, LBW था. हाँ, not only he gets he's getting important wickets, he's अभी अगर scoring very important runs. इंडिया का अगर कोई T20 गेम होता है ना, ऐसा समझ ले ओमान या ऐसी किसी टीम के साथ, तो मैं तो शार्दुल और चाहर को ओपन कराने भेज दूंगा. मैं चाहूँ करो क्या तुम लोग को जो करना है, ऐसे ही. I just want to see कुछ पागल बना. बट मेरे लिए शार्दुल मैन ऑफ द मैच था. I would have मेरे लिए given भी, it to him yeah, more than Rohit I over would have. रोहित. In मतलब fact मेरे लिए yeah बुमराह मैन ऑफ द मैच था. हाँ मतलब कंटेक्स्ट yeah, के हिसाब से जो runs when he scored the first innings, I think that set up the even in game. the second innings, like he was there at a critical stage. So हाँ, मेरा भी मैन ऑफ द मैच शार्दुल ही था. बताओ भला, अभी बात कर रहे हो टीम में होना चाहिए कि नहीं, और अभी वो हाँ मैन ऑफ वही द मैच भी था. वही तो ना. Like it's just that शार्दुल को he's भेजो 3 डाउन रहाने की जगह. फिर शार्दुल को हाँ, बॉलिंग में because जो भी मिले वो benefit. honestly speaking, at this point, I'm just saying, so just replace Shami with Bumrah if you want to rest him, or even Ishant with, Siraj with Ishant, just because if you want to rest them, and just play Ashwin for Rahane. Like It won't. you will be all set. It won't affect It won't take anything. anything out of that lineup. Yeah. Exactly. I mean, if I Ashwin don't is know. going to I don't know if bag you a pair, watched. then very likely he would have. I Yeah. don't know if you watched Rahane's second innings. Yeah, he batting. was looking like a deer caught in the headlights. Headlights. मतलब उसको नहीं लग रहा था कुछ कि दो बार, उसके एक लिए बार एक बार हुआ, एक बार किस्मत से बचा वो, फिर हाँ. आउट हो गया. इनफैक्ट मैं उसका फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग देखा था. फर्स्ट इनिंग्स में एक्चुअली बैटिंग क्वाइट सॉलिडली इन दैट सेंस. वो 14 जो मारा था उसने, डिडंट लुक लाइक ऐसा आउट ऑफ डेप्थ सब नहीं. सेकंड इट इनिंग वाज अ में क्लासी 14. हाँ, इट वाज अ क्लासी 14. ऐसे बहुत लोगों का होता है ना. वीवीएस लक्ष्मण गया था तुम लोगों को. क्लासी 30 मारता था बहुत. ब्लॉमफोंटेन में वीवीएस लक्ष्मण का 28 या 31 है. इन द सेम गेम में सहवाग डेब्यू. मतलब ऑल टाइम ग्रेट 30s में आएगा वो इनिंग, उस तरह का. सो बट सेकंड इनिंग्स, लिस्ट बनाएगी कभी ऊपर. सेकंड इनिंग्स में मतलब ऐसा लग रहा था कि टेलेंटर बैटिंग कर रहा है लिटरली. मतलब डिडंट नो व्हाट ही वाज आउट देयर डूइंग, वैसे टाइप का. कॉन्फिडेंस उसका मर गया है. मर गया है. उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. उसको काउंटी क्रिकेट या कुछ खेलना चाहिए. वो अगर T20 और IPL टोटली बंद करके, इफ दैट गाय वांट्स टू एक्चुअली salvage his career, what it was destined for, he actually should
get out of this IPL wala cycle and then go play a couple of seasons of first class cricket. Eventually to देख ना, मतलब if you are a Pujara or a Rahane, you know that you're not going to be remembered as a white ball cricketer, right? Yeah. So why try at all? मतलब you have enough Yeah, money. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि like why was Pujara even picked for CSK and why should he even be in the draft? I don't know. None of us Like, have the idea of like how an elite athlete, and अरे because they have such a short lifespan. धोनी needs an anchor, I think. अरे फाफ है ना, धोनी खुद क्या है, but उस टीम में मारेगा रन कौन? शार्दुल और Sam सैम बेटा वही करन। आईपीएल जीत के आ जाएंगे Sam ना, Curran. जब तब फिर अपन बैठ के हम बातें करेंगे, वही जीतेंगे आईपीएल। पॉइंट नहीं, इज वो तो ठीक है। पुजारा के पर्सपेक्टिव से सोचना, मतलब कुछ तो पैसा तो इन लोगों को मिल रहा है ना ठीक ठाक। दे आर ऑफर्ड लाइक डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? हाँ I know a पुजारा lot. तो I know some A ग्रेड में है ना। एक्स्ट्रा मनी डजंट हर्ट, लेकिन तू टेस्ट करियर प्रोलॉन्ग कर सकता है अगर तेरा बैटिंग फॉर्म अच्छा है तो। एंड इफ यू आर व्हाई टू गेट इनटू दिस थिंग ऑफ लाइक, And you're not going to even play Get with matches. एक्चुअली CSK. पुजारा जो खेला है सेकंड इनिंग्स में काफी काफी अच्छा अच्छा। खेला है। अरे हाँ, even हाँ, that 91 was very good. तुम लोग इस सीरीज का सबसे अंडररेटेड इनिंग्स भूल रहे हो। रनचेज जो था, जो रेन आउट हो गया था, हाँ वहां पे उसमें भी उसने he सेकंड इनिंग्स, सो ही इज डूइंग समथिंग इन द Yeah, सेकंड yeah. इनिंग्स, yeah. which a few people suggested is just that the wicket flattens out in the second innings and he just it's easier to go for it, but I don't know. आईपीएल में भी जब तुम लोग देखोगे ना 40 बॉल 100 पुजारा है, उसके बाद बात करेंगे अपन। नहीं वही तो ऐसे बोल रहा वाले हूँ, he शॉट्स के won't- उसका एक्चुअली इवन तुम लोग गैबा में ले लो वो वाला इनिंग, सेकंड इनिंग्स में वो फ्लरी आता है उसका एक बाउंड्रीज का एक फेज में, मतलब बहुत पकाता है। देन ही गेट्स वो अ फ्यू तो कट शॉट्स शुभमन को देख के शुभमन बोल रहा हूँ, मेरे को देख के इसको भी जोश आ गया। अपर कट वगैरह मारने लगा था वो भी। हाँ, एक्चुअली वो क्योंकि शुभमन अभी फिट होता ना तो मैं बोलता कि शुभमन को ले आओ यार। शुभमन हाँ, of एट course. 5 तो अरे- इजी फिट इन। yeah. शुभमन विल एक्चुअली गिव यू दैट अर्ली रहने वाला जो इनिंग्स था ना, वैसा जो काउंटर अटैकिंग 100, शुभमन तो आराम से दे देगा वैसा वाला। दैट इज व्हाट रहाने's ओरिजिनल रोल वाज, राइट? तो वो शुभमन आराम से कर देगा बिगेस में, मुझे लगता है। he'll be found out. But Rahane is a better पता है कहाँ खिलाना Rahane is चाहता a better batsman than Lakshman when the But- ball is averaging below 28. नहीं, तुम लोगों ने वो स्टैट्स देखा क्या? किस तरह का टट्टी टेक है तो यार तो ये? ये टेक, इस पे हम जाते हैं। हाउ मच टाइम डू वी हैव नाउ अपने पास? और We have a bit. 15-20 मिनट्स है ना? तो Yeah. देन हाँ, तो उसका टेक ये था कि ही मेक कंपाइल्ड अ लिस्ट, सो ये कंटेक्स्ट देना है ना ऑडियंस को, मतलब वो लगेगा कि हर कोई नहीं पढ़ता है, एंड अ लॉट ऑफ देम आर ब्लॉक्ड आल्सो, सो हाँ, So we must even give I it. am blocked. But okay, मैं एक hack बताता हूँ, life hack for people who have been blocked by some other people on Twitter. If their account is not private, then you can just paste their tweet links in an incognito mode, or without logging into Twitter, you can do that. So so what I do is like when I'm doing it, if you just Google the handle, and if the handle is not protected, you can still scroll through their tweets without सेल्फ logging. फ्लैजेलेशन अगर तुमको चाहिए, अच्छा लगता Yeah, है तो you can do that. Yeah, you can do because that. I do this, and then I take screenshots and rant हाँ, on तो those things. उसने ये बोला कि he compiled a list of Indian batsmen and their averages against bowlers who average 28 or less. Okay, it's basically conditional probability वाला जो ये है, उसने एक फिल्टर लगा दिया। It's And- not even that. हाँ, तो उस फिल्टर में some batsmen average very low, जैसे पुजारा averages like in his early 30s against bowlers who average 28 Less or than less. 28. Kohli averages 50, I guess, like 45, I think. And Lakshman averages in the 30s again. But these guys' overall career averages diverge a lot, right? Yeah. So one is that say Rahane scores well against bowlers who average 40, मतलब average 28 or less, is tells you that ठीक है वो survive कर लेता है, and he gives examples. एक article लिखा है उसने कि Cummins और ये सब के साथ में उसका अच्छा average है, रबाडा वगैरह का अच्छा खेलता है. But the point is, then if you get out to say a Colin de Grandhomme eventually, तो eventually Yeah. टीम को नुकसान तो नहीं होता है ना. That's नहीं, and the point is कि क्या क्रिकेट सिर्फ ऐसे ही होता है क्या? यही बॉलर मेरे को बॉलिंग कर रहा है. Like the whole point is the people you're struggling against just survive and score as much as you can when you like. That's the whole point of test cricket, right? मतलब survive when you can, and then like the cash in after T runs जो होते हैं ना, like Give the all the first test matches- hour to the bowler.
Yes. and the See, whole day तो is yours. मतलब इसलिए ना मुझे लगता है कि लाइक नो मत नो मत नो उस मत बंदे दे ने दूंगा. उस बंदे ने उस बंदे ने कोई आई थिंक उसके एटीट्यूड की वजह से ना उसके मोहल्ले में भी उसके दोस्तों ने उसको कभी क्रिकेट नहीं खेलने दिया है उसको उसको कुछ नहीं पता है उसके साथ हाइड एंड सीक भी नहीं खेला होगा लोगों ने उसमें भी वो बोल देता होगा कि ये दीवार के इस एंगल से मैं देख रहा था तो तुम ये लीगल है और वो उस एंगल से देख रहे थे तो नहीं मतलब I think I don't want to use some words here, but I think he's lost it. Like और क्या क्या नए words लेके आया था ना कुछ तो psychobabble. Psychobabble is now a very ये- popular term. हाँ या बेसिकली मतलब कुछ नहीं मैटर करता है. Every ball is a same event, and it doesn't matter if you're facing Glenn McGrath or Alan Donald or if you're facing Colin DeGrando. Nothing matters. बट इस पे एक और चीज बोलना था मुझे, मतलब आजकल तुम लोग ये इस टेक्स पे How नहीं can you बोलने का just मेरे को. imagine यार तो just हमने भी ऐसे कोई हाई फाई कुछ हमने ऐसा कोई क्लब लेवल पे भी क्रिकेट नहीं खेला है राइट. हाँ, तो सोच इवन इवन अपने गली में भी क्रिकेट कोई अगर खेलते वक्त ढांसू कोई टाइप का कोई बॉलर अगर है. हाँ, कोई अपने से 10 साल बड़ा भैया बॉलिंग कर रहा हो और कोई चिल्ला पिल्ला अपना दोस्त बॉलिंग कर रहा हो तब भी डिफरेंट वो फील होता है भले ही वो कैसा भी हो. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया लाइफ में मुझे स्पोर्ट्स गली क्रिकेट में रिलेटेड. सबसे ज्यादा डर किससे लगता था पता है? पीपल हु कुड टर्न द बॉल, बिकॉज दे कैन मेक यू लुक या वेरी फूलिश ना. मतलब जो या गली या क्रिकेट रबर बॉल से खासकर अगर कोई लेग स्पिन वगैरह डालता था, मतलब इट कैन या टर्न रियली बिग एंड यू कैन लुक एब्सोल्युटली आउट भी नहीं होगे तुम. और या वो ऐसे मतलब इतना खराब लगता है, मतलब एम्बैरेसिंग लगता है व्हेन यू आर No, फेसिंग. I have a friend who was actually very lean and fast. Like he was wayward, but if even while playing with a tennis ball, अगर लगती थी ना उसकी बॉल तो like it hurt you on the body. And others were just like us who will just roll their arm over and you can somehow manage. तो even with them there was a different pressure कि हाँ इसको मैं थोड़ा confidently front foot पे आके मार सकता हूँ but उसको मैं नहीं मतलब I won't even attempt because I am afraid कि कहीं लग ना जाए. So आजकल तुम, आई नो दैट दिस इज लाइक प्रोबब्ली द बेस्ट इंडियन टेस्ट साइड ओवरऑल. अगर yeah. ठीक है, मोस्ट पीपल विल एग्री, बट तुम ये टेक्स देख रहे हो आजकल कि एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस टू आस्क, लाइक टीम कंपोजिशन पे क्वेश्चन हाँ किया, हाँ देन लाइक दीस पीपल नो बेस्ट, व्हाई आर दीस पीपल इवन क्वेश्चनिंग. मतलब हम्म. तो व्हाट इज आवर जॉब एज, मतलब are we not supposed to have an opinion at all as like people who watch the हाँ game? that's the thing right? मतलब Yeah, then that's what's the the thing. point of sport entirely? The और point ये of sport is to see the numbers. नहीं और ये मतलब वही now that we have moved there होल्डिंग को गाली देना नया फैशन बन गया है. हाँ, क्योंकि अभी होल्डिंग पॉपुलर मतलब कमेंटेटर है ना, तो होल्डिंग सिर्फ बहुत ये भी साइकोपैथी करता इंफीरियरिटी है. कॉम्प्लेक्स ही है जो उभर के आ रहा मतलब है. ये I मैं बहुत can दिनों से सुन रहा हूँ let पता है. somebody said holding is the most mundane and dull. ही He इज can अतर अली something. खान विद अ बेटर हाँ एक्सेंट. मैं और बोल रहा हूँ भाई if Holding would just narrate his walk down the street na that would be even more interesting than your life. So just calm down. Just वो क्या बोलते हैं वो लोग ग्रेट क्रिएटर वाले कूल दाई जेट्स. बट मतलब एक कुछ ही भी चीज है ना अनशंट निशांत, बोल रहे हो बट मतलब. अभी द कूल थिंग टू डू दीज डेज इज लाइक कमेंट्री में अगर कोई हर 2 मिनट में कंट्रोल परसेंटेजेस और हाँ हाँ इतना हाँ. डिग्री स्विंग हुआ या विन विस का नंबर्स नहीं ले रहा है, तो then they are offering nothing to the viewer. But imagine, like I understand the need for all of these statistics and numbers, but अगर तू चार का चार commentator वही करेगा तो then would it be watchable? Like test cricket is like a 7 hour a day Yeah, sport, right? and they And there are have a third segments, guy to do that. Yeah, yeah. and the holding will offer you that when it comes to fast bowling, for example. Yeah, and yeah, exactly. That's what I was saying. कि it's not that. So वो जो third man वाला जो feature होता है, right? Sky Hmm. Sports का. Hmm. So उसमें people it's not that कि switch हाँ, roles. हाँ. yeah, they switch and even if Holding is telling you stories, but when it comes to some fast bowlers and some field placements, he does contribute there. It's Eh, not even like and same with Vaughn. I think Vaughn से तो ना मेरे को लगता है बहुत से लोग Vaughn की lifestyle से बस jealous हैं. but And one that's why spin नहीं, but one spin bowling, when it comes to spin bowling, one does offer insights. मतलब वो वही बात. एग्जैक्टली बोल रहा हूँ मैं कि यू हाउ कैन यू डिस्काउंट व्हेन ही इज लाइक ही इज वेरी He's horrible at lively. Sky, at Fox. Yeah, Fox. No, Fox. that's a different matter. But even in at like even when he's doing Fox, he's not like कि वो बार बार एक ही चीज like he does understand like he's fucking Shane Warne. He does understand कि मतलब कहाँ पे फील्डिंग होनी चाहिए. Like how many times he was saying कि
mid wicket लगाओ Vokes के लिए and all those things, like, so, and eventually that's where he got out. So it's like, acumen तो होगा, but my point is that even if someone doesn't offer, so like Ian Chappell today, if he does commentary, like हमारे पास सबको nostalgia है of Ian Chappell, he hasn't commented for a while now. Anecdotal commentary अगर Ian Chappell has tactical nuance वगैरह offer करता है, but anecdotal commentary itself has room, right? मतलब that test cricket has room for anecdotal commentary. क्यों नहीं है? मतलब एक टोनी गोजियर या हेनरी ब्लूफील्ड टाइप के लोग हैं who bring in stories that is needed for test cricket. Otherwise, like 7 hours a day for 5 days, अगर बंदा सिर्फ यही numbers और statistics पे बात करता रहेगा, तो beyond a point it will get painful. I think Hussain does that well. Hussain strikes the balance very well. yeah, that's true. अच्छा, ये something on Sky Cricket, they had this last weekend. So they had this entire segment about families and how they shape careers of cricketers and something. तो ये छोटा सा पैनल था, Hussain Atherton और there was Mark Butcher, I think, और they were all talking about family stick, and it so turns out that Mark Butcher's dad and brother have also played cricket, and Nasir Hussain's dad has played one Ranji Trophy game for Tamil Nadu. Okay, इससे ज़्यादा नहीं. वो नरेट कर रहे थे कि how they were influential in our careers and all of that. तो commentary मतलब नीचे comment section में YouTube में अपने लोग पहुंच गए. Nepotism, अरे here in India we are questioning nepotism and you people are celebrating it in Britain. Wow, that's the difference between India and England. तो वही ना, मतलब हर चीज में ना विक्टिम बनना ही आके, मतलब घुसा देना है सर अपना खुद ही. भाई मार्क बुचर is talking about his grandmom who used to conduct clinics for kids in the neighborhood. वो कोई ऐसा टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे उसकी ग्रैंडमदर, ऐसा नहीं कि उसको घुसा दिया टीम में, मतलब कुछ मतलब चल. The same people, there was India versus Nepal football match going on, friendly, and friendly, and the same people in that feed were making racist comments on Nepali players. So like who is here for something? ये भी अपना classic Indian YouTube comment है, ठीक है? Who is watching this in September 2021? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा होता है. कोई भी random वीडियो ले लो, कोई भी ऐसे इंडिया का मतलब पॉप म्यूजिक वाला, who is watching this live? वैसे to be honest, like I only read YouTube comments when somebody recommends me कि इस वीडियो के नीचे देख क्या. I never go to comments. YouTube comments में तो मतलब gold mine है भाई वो. I know, but Coke Studio पे जाओ, मतलब Coke Studio पे मिलेगा India Pakistan friendship. Yeah. United by divided from India, love from India, divided by politics, united by Coke Studio. अभी वो भी जाएगा ना Coke Studio संस्कृत, like खैर भी diverse podcast है. But moving on, next test. Do you think England has a chance? Yeah, definitely. Both these teams are like as good as the bowling attacks are. I still don't have much confidence in anybody's batting, so anything can happen. Flawed batting. Like, that's you again. Yeah, and that adds to the fun. It can go either way. If it doesn't rain, it can still go either. Even if it rains and it's 3 full days of cricket, 4 days, yeah, it can still. You make up days, right? मेरे को एक KL राहुल का एक 80 चाहिए. पर्सनल है वो मेरे लिए. चोकली भाई. मुझे पंत का चाहिए कुछ. मुझे पंत का चाहिए. I think Kohli is now at that stage that he's मतलब ठीक है, I know he hasn't he's looked okay. अरे मार लेगा अभी होम टूर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1-2 सेंचुरी मार देगा, सब हो जाएगा. फिर ऐसा स्लिप कर देगा, हो जाएगा. हां, वो जेमिसन को बोलेगा ऐसा कर देगा. जेमिसन को ऐसे ऊपर होके. नहीं, मैं बोल रहा था कि like even if he doesn't, he's looked okay, like he hasn't, मतलब उसने इम्प्रूव किया है स्टार्टिंग से. सो इट्स फाइन. 50 मारा है, ठीक है. हां, इट्स ओके. मार देगा सेंचुरी, डोंट वरी. मार देगा बच्चों, मार देगा वो. या आई मीन इंडिया में भी अभी देखो अहमदाबाद में जब मैच होता है डबल भी मार सकता है कोई. अहमदाबाद में आया. और अभी तो ऐसा है कि इट्स वेरी अर्ली इनटू द नेक्स्ट WTC साइकिल, सो वी डोंट इवन नीड टू पैनिक एंड मतलब मे बी वी एक्चुअली प्रोड्यूस डिसेंट विकेट्स दिस टाइम. अहमदाबाद से गया भूत. नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बदला सीरीज है ना भाई. अरे यार हाँ, ये न्यूजीलैंड तो अभी कुछ और ही हर जगह हक के आ जाते हैं, फिर बदला लेते रहते हैं. अभी नहीं है, अभी तो जीत के आ रहे हैं हर जगह.
हाँ अभी जीत गया अभी वापस इंग्लैंड जब आएगा ना इंडिया खेलने तब होगा फिर से मारेंगे फिर से हाँ पुंगी सीरीज पहले घर में घुस के मारा और इस बार घर में बुला के मारेंगे और एक बार घर में बुला के ऑलरेडी मार चुके हैं ना तो बुला के मारेंगे बुला के मारेंगे And on that fun note, we can call this episode a wrap. ये तो T20 हो गया आज का अरे ये कोलैप्स हो गया है जल्दी सेशन में ही इस टेस्ट मैच ने हमने 3 एपिसोड दे दिया बंद कर रहा हूँ रैप हाँ That's 4 in a row. There is Blues. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style.